In this video, we will discuss about the second method for solving the second order ordinary differential equation with variable coefficients. So we write down to solve linear differential equation of second order by removing first derivative. So this is the second method. First method we have discussed related to part of CF is known. This is the second method by removing the first derivative or reducing to the normal form. We can say the reduction to normal form. So this is the specific method. Now we will discuss about the working procedure for this method. So let the linear differential equation of second order be d2y over dx square plus p dy by dx plus q y is equal to r. Now, so first important thing that means we note this thing. So the coefficient of d2y over dx square should be 1. So ये हमें ध्यान रखना ही होगा दोनों केसेस में. If it is not 1, it is not 1, we make 1 by dividing. Then we decide P, Q and R. उससे पहले डिसाइड नहीं करेंगे, पहले कोफिशिएंट हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए. इफ इट इज 1, so then we decide directly. If it's not 1, then we make 1, we decide the P, Q and R. So now after deciding P, Q, R, so we have the first step. The step 1, find I. So I equal to Q minus 1 upon 2 dp upon dx minus p square upon 4. So this is the main part of this particular method. So we can consider this as equation number 2. So we consider this as equation number 2. Now, where we are going to apply this method, so we check if the value, so first we calculate the value of I. If the value of I comes out constant or constant upon x square. Constant या तो constant आए purely या constant upon x square आए only. So then this method is applicable. This method is applicable. Otherwise not. तो ये आपको ध्यान रखना होगा. Otherwise not. That means we get a constant value or constant upon x square value. So then we apply this method. Otherwise we move to the further method. Now, so we see that if the value of I is constant or constant upon x square, so then we proceed to the next step, step 2. So to find
अब इसके बाद हमें जाना होगा आगे स्टेप्स में, अगर कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। सो टू फाइंड u be the variable which have the value u equal to e raised to the power minus 1 by 2 integration p dx. So this is the equation number 3. Now after finding the value of u, we move to the next step. Next step, so we consider let y is equal to ub. Y equal to ub is the complete solution, is the complete solution of equation number 1. Now, so here we consider uv is equal to complete solution of equation 1. We move to the step number 4. Step number 4, so the first derivative, removing the first derivative. So equation 1 reduced to the normal form. Equation 1 reduced to the normal form. So this normal form, we have fixed d square v upon dx square plus iv is equal to s. So this is our equation number 4. We have to remember this normal form also. So I we have already calculated, s. Now, so here we can write down as where I is given by equation number 2, and s is equal to, so we have to write down the value of s. So the value of s is equal to r upon u. So the value of s, which is r upon u. So r, we have already find out the value of p, q, and r from equation number 1, and u equal, we have calculated from equation number 3. So this can be written as r is equal to u means uh, e raised to the power 1 by 2 integration p dx, raised to the power integration p dx. So we consider this as equation number 5. Now we move to the next step, that is the step number 5. So solution of the differential equation 4. So when we are going to solve the equation number 4, so there are two cases here also. So that means case first. First case, let iota, iota is equal to constant. अगर iota purely constant आता है और constant में suppose कर लिया हमने k, so k say, so then the equation 4 can be written as equation 4 can be written as d square v upon dx square plus iv is equal to s. iv means I replaced by k. So here we directly replace iota by k. So here we write down the k directly. So now, so how to solve such type of equations? So that means when k is purely constant, so we solve by making the auxiliary equation. So by making auxiliary equation, so we write down d over dx by capital D. So this can be written as d square plus k into v is equal to 0. So we are going to solve the differential equation with constant coefficient. Now making auxiliary equation. So auxiliary equation, we replace d by m. d को किससे replace कर देते हैं? m से. तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0. अब इसकी क्या कर देंगे? रूट फाइंड आउट कर देंगे. तो फाइंडिंग द रूट्स, तो m इक्वल टू प्लस माइनस रूट के आई.
root k into iota. So when we find out the roots, so after finding the root, we write down the CF. So write complementary function. Complementary function. A complementary function, we have several rules for writing the complementary function. That means if roots are real and distinct, here we will discuss. So complementary function, if roots are real and distinct. So roots are real and distinct means alpha 1, alpha 2, alpha 3. तो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो सी एफ कैसे लिखा जाता है इसका? तो सी एफ इक्वल टू वाई C1 e raised to the power alpha 1x plus C2 e raised to the power alpha 2x plus C3 e raised to the power alpha 3x. So this is the first way to write the complementary function. Now we shall move to the second method. Second method, when roots are real and equal. So here we write down if अगर roots हमारे real हैं और equal हैं, roots are real and equal. So roots are real and equal. So means alpha 1 roots आ रहे हैं किसी भी इसके. सपोज इस तरीके की इक्वेशन है, डी स्क्वायर सॉरी डी -2 to the whole square, इस तरीके की इक्वेशन आ रही. तो d-2 to the whole square equal to 0. So alpha roots are repeated. That means real and equal, or we can say that the repeated roots. So repeated roots. अब repeated roots को solve करने के लिए सी एफ जब लिखना है हमें तो क्या करते हैं? y इक्वल टू C1 प्लस C2x और e रेज टू द पावर अल्फा 1x. नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट वी विल यूज. तो टू रूट्स हैं, टू कांस्टेंट, थ्री रूट्स, थ्री कांस्टेंट. तो दिस इज फॉर सेकंड केस. और थर्ड केस, थर्ड केस इफ सम रूट्स आर रियल एंड सम आर इक्वल. सम आर इक्वल मतलब मिक्स हो गया पहले केस वन और केस टू का. ऐसे रूट्स टू डिस्टिंक्ट रूट हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ लिख देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड सम आर इक्वल. सो अल्फा 1 अल्फा 2 और नेक्स्ट रूट्स आ गए हमारे अल्फा 3 अल्फा 3. तो इसका जब सी एफ लिखना होगा आपको, तो सी एफ वी कैन राइट डाउन एज वाई इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट की तरह अल्फा 1x प्लस C2 अल्फा 2x, C2 e raised to the power अल्फा 2x. तो C2 e raised to the power अल्फा 2x और फिर हमारा क्या आ गया, ये इक्वल रूट्स आ गए, तो इक्वल का इक्वल की तरह कॉन्स्टेंट्स हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे. C3 प्लस C4x e raised to the power अल्फा 3x. तो ये तो थर्ड प्रोसीजर. और लास्ट हमारा आ गया किस पे? कॉम्प्लेक्स रूट्स पे. नेक्स्ट केस आ गया हमारा जो रूट्स होंगे इमेजिनरी रूट्स. इफ रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर, अगर हमारे रूट्स कैसे आ रहे हैं? इमेजिनरी. इमेजिनरी मीन्स प्लस माइनस आयोटा, इस फॉर्म में आ रहे हैं. तो इमेजिनरी रूट्स की एक कंसर्न क्या होता है? इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकर इनटू द पेयर. तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर. तो ये पेयर में अकर होते हैं. जैसे किसी भी इक्वेशन के लिए आपने एक रूट निकाल दिया आई. जैसे सपोज हमने आई किसी भी इक्वेशन का रूट है, तो माइनस आई भी उस इक्वेशन का रूट होगा. तो ऑलवेज अकर इन पेयर. और सेम केस आता है हमारा किसके लिए? इरेशनल रूट्स के लिए, कि अल्फा प्लस रूट बीटा, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा किसी भी इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा. तो ऑल्सो अकर इन पेयर. तो ये रेशनल रूट्स भी ऑल्सो अकर इन पेयर. तो ये भी पेयर में अकर होते हैं. अब बात आती है हमारी कि जैसे सपोज कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं हमारे, तो हम कॉम्प्लेक्स रूट्स आर इन दिस फॉर्म.
और रूट्स हमारे किस फॉर्म में, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का जब सीएफ लिखना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे उसका, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल, तो रियल रूट्स आ जाएगा ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स, और कॉम्प्लेक्स रूट सी वन कॉस बीटा एक्स और प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो एक तरीका तो ये हो गया इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स को लिखने का। और अगर ये तरीका आपको यूज नहीं करना है तो यू कैन यूज सेकंड वे, तो ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स और प्लस माइनस सी, और नेक्स्ट वे, और y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स और साइन बीटा एक्स प्लस माइनस सी। So there are several ways to write the five ways approximate to write the CF of complex roots. Now we will back to the our method. So first we write down the complementary function. अब complementary function लिखने के लिए that means we check the roots. Roots are real or distinct. जो भी roots होंगे हमारे उनके basis पे हम उसका CF लिख देंगे. So then after writing the CF we move to the PI. Now to find पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब फाइंड करना है हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीआई। अब पीआई निकालना, अब पीआई निकालने के लिए क्या होता है, पीआई के लिए क्या मेथड्स होते हैं, तो पीआई 1/FD, तो हमें क्या लिखना होता है, 1/FD। एफडी मीन्स जो एलएचएस पार्ट है हमारा उसको एफडी, फंक्शन ऑफ डी। तो ये एफडी क्या हो जाएगा, 1/FD इंटू क्या आता है, आरएचएस साइड। तो आरएचएस साइड हमारी क्या है, एस। So this can be written as 1/d² plus k, d² plus k into s. अब d² plus k into s. अब we have several methods for finding the pi also. So we will discuss in questions the methods when we have applied. So finding the pi, so then we write down the complete solution. So that means basically first we write down the solution. So solution we write in terms of v equal to complementary function plus particular integral, cf plus pi. So that means complementary function plus particular integral. और अगर इसी में फिर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होगा, सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू u इंटू वी, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो हमारी है मेनली वो तो y की फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन y की टर्म्स में ही जाएगा। तो y इक्वल टू यू वी कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y इक्वल टू यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन 3 से, और v हमारा क्या होगा, जो सी एफ प्लस पी आई कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन हम i इज कांस्टेंट। ओके, नाउ वी मूव टू द केस सेकंड। अब केस सेकंड किसके लिए है, जब कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, कि द वैल्यू ऑफ आई इफ द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर हमने मान लिया कि वो के अपॉन एक्स स्क्वायर है। सो के अपॉन एक्स स्क्वायर, सो देन इक्वेशन 4, और 4 जो नॉर्मल फॉर्म थी वो क्या हो जाएगी हमारी, d² वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस k अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू v इज इक्वल टू s। नाउ वी कैन राइट दिस फॉर्म into this, d² वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वी इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर। so this is our next equation. We have 5 equation, that means this is our sixth equation. So this is our next equation, sixth equation. Now अब इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से करते हैं हम, और इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट है, दैट मीन्स वी कंसीडर एज एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स डी अपॉन डी एक्स we denoted by d, or we use the substitution x is equal to e raised to the power
जेड। और ई रेज टू द पावर जेड, सो जो वैल्यू होती है हमारी किसकी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, वो क्या लिखा जाता है हमारा, डी डी माइनस वन। डी इंटू डी माइनस वन, अगर वी है तो यहाँ पे वी आ जाएगा, डी डी माइनस वन। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डी डी माइनस वन, डी माइनस टू। ओके, सो वी विल डिस्कस। So we can write down the solution of this. So here we have a d into d minus 1 or plus k from equation number 6. So into v is equal to s x square. So x we also replace by e raised to the power 2z. X square we replace by e raised to the power 2z. और s भी अगर x का टर्म है तो we also replace by e raised to the power 2z. So find, अब यहाँ पर सेम प्रोसीजर, तो फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो दैट मीन्स फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे एम से, एंड फाइंड रूट्स, और आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन कैलकुलेट सेम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करके राइट डाउन द वी। वी अब किसके टर्म्स में लिखा जाएगा हमारा, जेड के टर्म्स में, क्योंकि हमने वी को यहाँ रिप्लेस कर दिया एक्स इक्वल टू ई टू पावर जेड में। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो जेड के टर्म्स में आएगा। तो वी इक्वल टू आएगा इन टर्म्स ऑफ जेड, इन टर्म्स ऑफ जेड सॉल्यूशन जो आएगा। तो कन्वर्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्स, तो एक्स में कन्वर्ट करना होगा वी को। तो जब वी एक्स में आ जाएगा, सो वी राइट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन। So complete solution that y is equal to u into v. So we can say that where अगर u हमें अगला से कैलकुलेट भी करना है तो e रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन टू इंटू पी डी एक्स। ये प्रोसीजर है सॉल्व करने का, रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। सेकंड मेथड, व्हेन आई इज इक्वल टू प्योरली कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए बेसिक नीड क्या रही, फर्स्ट मेथड के लिए बेसिक नीड है हमारी कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और फॉर दिस मेथड वी नीड टू calculate the solution. So we have uh, linear differential equation with constant coefficient and variable coefficient. So that means x square and d square v upon dx square plus x dv upon dx type of equations. That means second case. So we take one question based on this for understanding the particular method. So now we take one question. So given the differential equation x square d square y upon dx square minus 2 x square plus x dy by dx plus x square plus 2x plus 2 into y equal to 0. Okay, so here RHS is 0 now. So when we do the solution of this, so first we check the coefficient of d square y upon dx square is 1 or not. So here we write down the coefficient of d2y over dx square is not 1. We make 1 dividing by x square. We make 1 dividing by x square. So when we divide this by x square, so we can reduce this differential equation in this form, minus 2 x square plus x upon x square into dy by dx plus
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0. नाउ वी गिव एज इक्वेशन नंबर 1. So now we decide the P, Q and R. So journal form हम यहाँ लिख लेते हैं. So what is the journal form of this type of differential equation is d2y over dx square plus P dy by dx or plus qy is equal to R. So we decide P, Q and R. So we decide P, Q, R. अब कोफिशिएंट जब कंपेयर कराएंगे तो P क्या होगा? P माइनस 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर. तो जब सिंपलीफाई करेंगे इसको, मीन्स डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स. तो 1 + 1 अपॉन एक्स. और क्यू, क्यू क्या है हमारा? क्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. और इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. और आर राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो आर जीरो हो गया. तो आफ्टर डिसाइडिंग द पी क्यू एंड आर वी मूव टू द स्टेप 1. और स्टेप 1 क्या है? आई कैलकुलेट करना. So to find I, so I is equal to Q minus 1/2 dP upon dx minus P square upon 4. तो Q पहले Q पुट कर देंगे, तो माइनस 2. सो -2 अपॉन एक्स. सो -2 अपॉन एक्स ओपन कर दिया हमने ब्रैकेट, और -1/2. और डी, सॉरी, फर्स्ट वी राइट डाउन क्यू. ओके ओके. So first we write down Q. Q is 1 + 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/2 और dp अपॉन dx. अब dp अपॉन dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो -2 तो कोफिशिएंट है ही, तो -2 कोफिशिएंट है. अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1/x का मीन्स -1/x स्क्वायर. -1/x स्क्वायर आ गया, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4. तो पी स्क्वायर अपॉन 4, तो मतलब 1/4 तो हमने लिख लिया, और पी स्क्वायर करेंगे इसका, तो 2 2 जा भी 4 हो जाएगा. तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 1 + 1/x² So now when we simplify this, तो 1 + 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर. और यहाँ से क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वहां से -1/x² आ जाएगा. और यहाँ पर क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस. अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो क्योंकि प्लस साइन है तो सारे नेगेटिव आ जाएंगे, तो 1 - 1/x² और -2/x. तो ये 2/x से 2/x कैंसिल हो जाएगा, 1/x² और 1/x². टू माइनस के हुए 2/x², और ये प्लस का 2/x², और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. दिस गिव्स अस 0. सो इट मीन्स द आई इज कांस्टेंट. 0 मीन्स कांस्टेंट. तो आई जो है हमारा वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. तो कांस्टेंट हो गया, तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेथड एप्लीकेबल होगा. तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल. अगर कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो देन मेथड इज एप्लीकेबल, अदरवाइज नो. सो व्हेन we find out I, so we calculate the value of u. So u is equal to e raised to the power -1/2 integration p dx. So this can be written as e raised to the power -1/2 integration p. p क्या है हमारा? p है -2 into 1 + 1/x और into dx. तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर. और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो डायरेक्टली वी राइट डाउन एज 1 + 1/x इंटू डी एक्स. तो 1 + 1/x इंटू डी एक्स, तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन. अब 1 इंटू डी एक्स है, अब इंटीग्रेशन कर ही देते हैं साथ ही साथ. तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स. एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स. तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स मीन्स log x. तो dx अपॉन x इज log x. अब इसको क्या कर देंगे हम? वी कैन राइट डाउन सेपरेटली e रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर log x. अब e रेज टू द पावर log करेंगे तो क्या हो जाएगा वो?
वन हो जाएगा, तो x इंटू ई रेज टू द पावर x, ई बेस ऑफ लॉग वन हो जाएगा, मीन्स लॉग हट जाएगा. सो दिस इज x log x, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ u. So this is the value of u. We can give the equation number 3, और I को हम क्या दे सकते हैं, equation number 2. Now we consider the complete solution. Complete solution we consider as y equal to ub. So let y is equal to ub. This will be the complete solution of equation number 1. So y equal to ub be the complete solution of 1. So we then removing the first derivative, then we remove the first derivative, removing the first derivative, the equation 1 reduced to the normal form, reduced to the normal form. और normal form क्या है हमारी, ये तो जनरल इक्वेशन डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बी इज इक्वल टू एस. So this is our equation number 5. So this is equation number 5. Now we put the value of I. So when we put the value of I, so this gives us डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई जीरो इंटू वी इज इक्वल टू एस. और एस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एस क्या है हमारी, आर अपॉन यू है. तो आर क्या आया है, जीरो, और यू कितना आया है, एक्स रेज टू द पावर एक्स. तो एस भी क्या हो गया, जीरो हो गया. तो एस भी जीरो हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे हम, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू वी इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन क्या निकालते हैं. तो सॉल्यूशन इज सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, सो इंटीग्रेट वन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सी बना जाएगा. अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा, सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू. इंटीग्रेशन करेंगे तो सी वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, और सी वन इंटू डी एक्स का मतलब सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v. अब इसको कहाँ पुट करना होगा, वी पुट इनटू द इक्वेशन नंबर 4 व्हेन वी कंसीडर द कंप्लीट सॉल्यूशन. तो कम 4 में पुट कर देंगे तो 4 क्या है हमारा, y इज इक्वल टू यू वी. तो y इक्वल टू यू, यू क्या निकला है हमारा, x ई रेज टू द पावर x, और v क्या है हमारा, सी वन एक्स प्लस सी टू. सो दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. We write down this is the solution of the given differential equation. Okay, more question we will discuss in next video.